Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज रो टॉपिक रे हमें बीसीएस थ्योरी विषय रे पढिबा। सो देखो सुपर कंडक्टिविटी विषय रे हमें जो डिस्कशन करूथिला ताकू एक्सप्लेन करबा पई गुडाए प्रकार थ्योरी प्रपोज करा जायथिला। अकॉर्डिंगली बहुत गुडाए थ्योरी रो सक्सेस देखा गला, केतरा जिंस रे फेल्युरिटी भी देखा गला। फॉर एग्जांपल गोटे हला फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय लंडन जोटा कि लंडन इक्वेशन रा हमें पढुथिला इन द ईयर 1935। तापरे सेमी फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी एरा दिथिले जिंजबर्ग आ लांडाउ थ्योरी को कहा जाय इन 1950। तापरे रहउची गोटे माइक्रोस्कोपिक थ्योरी जोटा कि द मोस्ट सक्सेसफुल वन व्हिच वाज गिवन बाय बार्डिन, कूपर एंड स्क्रीफर। ओके, सो अकॉर्डिंगली यांको ई तीन जण साइंटिस्ट रो ना रो जो प्रथम अक्षर को नेकी एब्रिविएशन आसिला याकू BCS थ्योरी, बार्डिन कूपर स्क्रीफर थ्योरी कहा गला इन द ईयर एमने दिथिले 1957। okay, so it is the most successful one and it can explain all the properties of superconductor किंतु गोटे जगह रे यार फेल्युअर देखा गला को जगह रे ना हाई टेम्परेचर जो क्रिटिकल टेम्परेचर सेरामिक सुपरकंडक्टर रे। ओके, आउ एई जिंस पई ए तीन जण साइंटिस्ट बार्डिन, कूपर आउ स्क्रीफर तांको नोबेल प्राइज मिलथिला इन द ईयर 1972 फॉर दिस वर्क। ओके, सो याको हमें आज ब्रीफली डिस्कशन करबा ए बीसीएस थ्योरी को। ओके, सो देखो ऊपर जेमती हमें डिस्कशन कला इन द ईयर 1957 this BCS theory was given, that is the Bardeen, Cooper and Skripal theory, in order to explain the phenomenon of superconductivity. So it is mainly based on the formation of Cooper pairs. Cooper pair होची दुईटा इलेक्ट्रॉन रो पेयर। ओके, डिटेल हमें आकु पढिबा। सो फॉर एग्जांपल गोटे मेटल रो केस हमें जदी नउचू एथरे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अराइज करे इट इज ड्यू टू द collision between the conduction electron which are free electrons with the vibrating ions of the lattice as shown in figure. So देखो एटी एटा होची इलास्टिक स्प्रिंग्स। सो ई हिसाब रे लैटिस वाइब्रेशन को हमें एक्सप्लेन करि परिबा। सो नॉर्मल स्टेट रे कोन हुए जो दुईटा इलेक्ट्रॉन जदि हमें देखिबा सेथिरे फोर्स रोची रिपल्सिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो two electrons will obviously repel each other because we know like charges repel each other. अच्छा, गोटे लैटिस कहले हमें कोन बुझिबा, इट कैन बी रिगार्डेड एज एन एरे ऑफ एटम्स which are connected by elastic springs ऊपर जो हम फिगर देखिला। so there are actually two types of oscillation of lattice, माने दुई प्रकार waves मूव करे लैटिस रे। ओके, जेमति हमें रेडिएशन कथा कहू सेथिरे each quantum of energy ताकू कहा जाए फोटोन। सिमिलरली इन लैटिस वाइब्रेशन each quantum of energy को हमें फोनोन बोली कहि थाउ। ओके, अच्छा ये हैला नॉर्मल स्टेट। सुपर कंडक्टिंग स्टेट कोन हुए द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिकम अट्रैक्टिव। ओके, सो एटा गोटे नुआ फेनोमेनन आसिला काहे कि हुए एमती ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर। ओके, सो बीसीएस थ्योरी रो जदि हमें बेसिक्स देखिबा एक्चुअली द बीसीएस थ्योरी postulates that the electrons experience a special kind of mutual attraction rather than the actual Coulomb repulsion between them. Okay, साधारण भाव में Coulomb repulsion हेबा कथा किंतु गोटे स्पेशल काइंड ऑफ पुनी म्यूचुअल अट्रैक्शन टे आसुची ओनली इन केस ऑफ सुपरकंडक्टर। ओके, सो ए जो म्यूचुअल अट्रैक्शन जते बेले Coulomb repulsion को डोमिनेट कर दोची ताले एटा सुपरकंडक्टर भलिया बिहेव करूची। सो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन रो गोटे पेयर क्रिएट होची जाहाकू कि हमें कहिबा कूपर पेयर। ओके, एंड इट इज formed at very low temperature. Okay,
अच्छा आ गोटे जिनस ए कूपर पेयर इट कैन मूव इन द लैटिस स्ट्रक्चर विदाउट एनी स्कैटरिंग माने विदाउट एनी रेजिस्टेंस okay so that the material will become a superconductor okay so let us discuss this BCS theory briefly देखो गोटे मेटाल रे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट एराइज करूची एक्चुअली इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी arising from a cooperative behavior of conduction or free electrons अच्छा ये जो कोऑपरेशन बा कोहेरेंस रहुची इलेक्ट्रॉन भितरे एटा केतेबेले संभव जेतेबेले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान क्वांटम स्टेट को ऑक्युपाई करिवे किंतु इट इज नॉट पॉसिबल काहे कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन होउची statistically they are fermions okay so statistical ଆଉ dynamical reason जदि देखिबा हमें ताहले भी इलेक्ट्रॉन दुईटा परस्पर को रिपेल करिवे ओके सो रिपल्सिव फोर्स एराइज करिवो सो से माने एकाठी रही परिबे नाही सो स्टैटिस्टिकली और डायनामिकली हमें देखिबा जे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दुईटा समान स्टेट रे रही परिबे नाही अच्छा हाउएवर मेटल रे कोन हुए जो रिपल्सिव फोर्स रहुची it is not very strong owing to the screening okay according to BCS theory कोन हुए both these difficulties माने statistical और dynamical difficulty can be overcome under certain circumstances okay so कोन हुए इलेक्ट्रॉन किछटा विशेष परिस्थिति रे कोन करिवे से माने दुई जण परस्पर को अट्रैक्ट करिवे in a certain energy range and they will form pairs ओके सो गोटे पेयर इलेक्ट्रॉन माने बुझिबा हमें गोटे इलेक्ट्रॉन रो होची हाफ इंटीग्रल स्पिन आ गोटे इलेक्ट्रॉन रो हाफ इंटीग्रल स्पिन सो दुईटा जदी पेयरिंग करे गेले देन इट विल बी एन इंटीग्रल स्पिन ओके सो गोटे इलेक्ट्रॉन रो पेयर सेटा बोसोन बलिया बिहेव करिवो इट विल बिहेव लाइक ए बोसोन सो दैट नाउ बोसोन पई आउ किछि रेस्ट्रिक्शन नाही ओके पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रे सुनु number of pairs can occupy the same quantum state which causes the coherence among the electrons okay so the complete BCS theory actually both यार technically both माने अच्छी technicality से भीतर को हमें जीवानी briefly या को हमें discussion करिबा okay so एथि पई जो किछिटा physical arguments बा idea अछि ताकू one by one हमें discussion करिबा प्रथमे आसिला the electron phonon interaction okay so देखो in 1950 Froelich ये जने साइंटिस्ट थिले he realized that the electrons could attract each other via the distortion of lattice okay so जेतेबेले इलेक्ट्रॉन टा मूव करूची गुटे क्रिस्टल रे it is producing lattice distortion and it is setting the heavier ions into slow forced oscillation okay so electron जेतु बहुत speed रे बहुत fast move करे तेणु so it leaves the region much before the oscillation can die off oscillation टा पूरा बंद हेबा आगरु ही इलेक्ट्रॉन टा से जगह को छाड़ी के पड़े जाए meanwhile if another electron happens to pass through this distorted region okay आ गुटे इलेक्ट्रॉन जदि suppose pass करिला then obviously it will experience a force which is one of the attraction okay and each of the type of polarization force okay so ei jo attractive force ta asila it will lower the energy of the second electron okay ଆଉ जो repulsion force रहिला दुईटा इलेक्ट्रॉन भितरे सेटा कमी जिवो okay since the Coulomb repulsion is instantaneous one while the attraction which is mediated by the lattice distortion जोटा हमें डिस्कस कला एटा highly retarded in time okay therefore जो attraction टा रहुची caused by even a very weak lattice distortion can also overcome a stronger Coulomb repulsion तेणु करी ओवरकम करिगला माने Coulomb repulsion रु आहुरी बेसी attraction पळे आसिला due to the lattice distortion तेणु net effect जदि हमें देखिबा will be attraction between the two electrons via a lattice distortion or simply a lattice distortion माने हमें कोन बुझिबा phonon okay it is the phonon mediated attraction so they will form a pair of electrons जाकु कि हमें Cooper pair बोली कि कहू
ओके क्वांटम मेकानिकली जदि देखिबा ताले सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रो वेव वेक्टर को कहला हमें k1 ओके सो एटा गुटे वर्चुअल फोनॉन क्रिएट करिबो जहार कि हमें एठी रिप्रेजेंट करला q so it will lose its momentum while the second electron जहार कि wave vector हेला suppose k2 it will acquire this momentum okay so जो momentum को ये first electron टा lose करूची सेही momentum टा second electron acquire करि जाउची during its collision with the virtual phonon so that overall momentum will remain conserved okay so এই জিনিসটা দেখো এটি ফিগার রে বি দেখাইছি this one so এটা আসিলা हमरो first electron এটা আসিলা हमरो virtual phonon okay so এটি লুজ করি গলা यार momentum so that k1 minus q हला तापरे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गोटे आछि k2 यार वेव वेक्टर आउ एठू पुनी इंक्रीज करी गला k2 plus q हे गला ओके सो ए हिसाब रे इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन रो इंटरैक्शन होउची ओके अच्छा सो ए जो फोनॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड ताकू हमें कहिबा वर्चुअल फोनॉन्स काहे कि बिकॉज they are very short lifetime okay they have very short lifetime which renders it unnecessary to conserve any energy during the interaction in accordance with the uncertainty principle okay now in fact nature jodi dekhiba of the resulting electron electron interaction it depends upon the relative magnitudes of the electronic energy change and phonon energy ओके सो जदि ए फोनॉन एनर्जीटा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज रु एक्सिट करूची बा बढ़ी जाउची ताहले द इंटरैक्शन विल बी अट्रैक्टिव एंड आल्सो द इंटरैक्शन विल बी स्ट्रांगेस्ट केतेबेले ना जेतेबेले ए जो दुईटा इलेक्ट्रॉन रो जदि इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटा रहउची आ स्पिन रहउची माने k1 इज इक्वल टू माइनस k2 s1 बा स्पिन is equal to minus s2 এই যদি কন্ডিশন হয়ে গলা তাহলে ଆମର strongest attraction by interaction ହେବ and such a pair of electrons is called Cooper pair okay এটা এই Cooper নাটা আসছে from a scientist L.N. Cooper okay সে এটা প্রথমে ডিসকভার করଥିଲେ and it was energetically favorable for such electrons in order to enter into an attractive interaction of this type okay so it is now obvious that the mass of an ion has an important role in case of your superconductivity okay so jette gote ion ro mass ta कमी jibo sette तार energy जो phonon ro rohuchi seta बढ़ी jibo okay which are emitted and hence larger will be the transition temperature okay so same conclusion ame रखी परिबा जोटा कि हमें आइसोटोपिक इफेक्ट रे भी देखिथिला ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सारछु या विषय रे सो इन फैक्ट इट वाज द आइसोटोप इफेक्ट व्हिच लेड फ्रोलिच टू कंसीडर द इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरैक्शन व्हिच इज पॉसिबल कॉज ऑफ योर सुपर कंडक्टिविटी सो ये ला फर्स्ट गोटे कॉज हमें देखिला तापर सेकंड एबे जो हमें डिस्कशन करूथला कूपर पेयर विषय रे एबे टिके हमें ब्रीफली स्टडी करिबा सो देखो ऑलरेडी हमें यार डिस्कशन करि सारिछु गोटे कूपर पेयर रो फॉर्मेशन होउची ड्यू टू द फोनॉन मेडिएटेड अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स जोटा कि डोमिनेट करूची तमरो यूजुअल कूलम्ब रिपल्सिव इंटरैक्शन को ओके सो ए जो कूपर पेयर बा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रो फॉर्मेशन हैला यार एनर्जी जदि देखिबा इन द बाउंड स्टेट इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू टू अनबाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउ ए एनर्जी डिफरेंस को हमें बाइंडिंग एनर्जी ई बी बोले कि कहबा ए इलेक्ट्रॉन पेयर रो ओके एंड बेसिकली इट इज सेम एज द एनर्जी गैप ओके आ यार वैल्यूटा पाखापाखी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बा अबाउट 10 केल्विन रहे इन टेम्परेचर यूनिट्स ओके आ ए बाइंडिंग एनर्जी टा एक्चुअली स्ट्रांगेस्ट बा मैक्सिमम हेबो केतेबेले ना जेतेबेले टोटल मोमेंटम ए पेयर रो जीरो हो जिवो and the pairs are in a spin singlet state with a symmetrical spatial wave function okay
सो एई कूपर पेयर साइज को कैलकुलेट करथिले कूपर जार वैल्यू आइसथिला r0 इक्वल टू h क्रॉस vf बाय eb एटी vf हेगला कैरेक्टरिस्टिक velocity of an electron in a metal which is nothing but the Fermi velocity. ओके फर्मी रू एटी सबस्क्रिप्ट एटा लागिची f ओके अच्छा मेटल रे एई जो फर्मी वेलोसिटी एक्चुअली रिलेटेड टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन concentration and it is typically यार वैल्यूटा पाखापाखि of the order of 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड रहे ओके यूजुअली एई जो वैल्यूटा रहउची vf रो it is along with eb यार वैल्यूटा इक्वल टू 10 to the power -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे ओके सो एई सब वैल्यू आम जब पुट करूँ इक्वेशन रे ताहले देख साइज जो आमर कूपर पेयर पर r0 वैल्यू 4 into 10 to the power -7 मीटर आसीबो ओके सो दिस इज रादर अ वेरी लार्ज वैल्यू एज compared to the typical distance between two electrons. Typical distance टा केते दुईटा इलेक्ट्रॉन भितरे it is of the order of 10 to the power -10 मीटर ओके ता माने 10 to the power -10 मीटर होची टिपिकल डिस्टेंस दुईटा साधारण इलेक्ट्रॉन भितरे डिस्टेंस रहिबा कथा किंतु आमे कैलकुलेट कला जे ऑर्डरटा आसुची 10 to the power -7 मीटर ता माने एथरु जणा पडुची जे कूपर पेयर एक्चुअली overlap with each other considerably okay and the coherence between them becomes very much important okay semane paraspara upare overlap karuchanti okay and this was shown by Bardeen, Cooper and Skrifer that the energy of this system is lowest when the total momentum of each pair is the same and it is equal to 0 okay and this is the single quantum mechanical state by singlet state into which the electron pairs condense okay so the flow of Cooper pairs constitute your super current okay therefore Cooper pair ame कहले बुझिबा it is a bound pair of electrons which is formed by the interaction between the electrons in a phonon field as shown in figure so देखो एटी फिगर रे एटा हमें बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन माने ये जो दुईटा इलेक्ट्रॉन एमाने हेले बाउंड स्टेट रे एंड दे आर फॉर्मिंग अ कूपर पेयर ओके आउ एठी देखो फ्री इलेक्ट्रॉन दुईटा एठी अछि ओके दे आर अनबाउंड सो इट इज शोन अ लैटिस भितरे एटा केमती कूपर पेयर रो प्रोडक्शन होउची से जिंसटा एठी फिगर रे देखैछि ओके so when the pair of electrons flow in form of Cooper pair then they do not encounter any scattering or any resistance factor so किछि भी resistance factor रहिबोनी that means conductivity पूरा पूरी infinity हिजबो जदि किछि बाधा ही आसिलानी that means they can freely go okay resistance माने opposition को ही बुझिबा so किछि भी जदि opposition रहिलानी that means it can conduct freely so it becomes infinity ସେଥିପାଇଁ याको ना करा जाइछि यार सुपर कंडक्टिविटी ओके जेमती कि फॉर एग्जांपल एठी गुटे बढ़िया एग्जांपल भी देइछि देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रो जो कंडक्शन रहउछि इन केस ऑफ नॉर्मल कंडक्टर ताको हमें कंपेयर करि परिबा विथ द बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर डांसिंग टू रॉक म्यूजिक ओके रॉक म्यूजिक रे गोटे किंतु क्राउडेड फ्लोर रे गोटे भिड़ जगह रे जदि रॉक म्यूजिक रे किछि लोक जदि नाचिबा आरंभ कले ताले कोन हबो सेमानकर जो रैंडम मोशन हबो ऑब्वियसली से माने बहुत जनक सहित कोलाइड करिवे मेनी कोलिजन्स विल बी अराइज्ड सो एटा हला तमरो को जगह रे नॉर्मल कंडक्टर रे एग्जांपल किंतु सुपर कंडक्टर रे एम्ति हबोनी इन कंट्रास्ट कोन हबो when current flows in superconductor then in the superconducting state the pair of electrons are very much similar to two dances which move in step okay से माने step wise माने move करिवे so that किछि भी आउ collision ही face करिवे नाही माने किछि भी opposition face करिवे नाही ओके तेणु करी तांकर कंडक्टिविटी बहुत बढ़ी जिवो इन्फिनिटी ही जिवो ओके सो एटा होची बेसिक तमरो कूपर पेयर रो ओके एबे थर्ड जिनसो एबे देखिबा एक्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप देखो कूपर पेयर जो हमें देखिला
से माने obviously गोटे बाउंड स्टेट दे आर बाउंड टुगेदर बाय वेरी स्मॉल एनर्जी सपोज याकू कहला हमें डेल्टा ओके एंड they are forming a new ground state which is obviously superconducting and it is separated by energy gap 2 delta okay from the next lowest energy state which is the excited state above it okay so excited state ru ei ground state ta gote energy gap 2 delta ର ସେପାରେସନରେ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଫର୍ମି ଲେଭେଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା এই ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାପ୍ର ମଝିରେ ରହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଂ ଏଟ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାପ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି above the energy gap and the superconducting electron state it is lying below the gap at the Fermi surface okay acha ei electron Cooper pair re actually they have opposite spins already ame upare eta discussion kari sarlani and equal and opposite linear momenta so as a result they form a system with zero spin and zero linear momentum therefore each Cooper pair may be considered as a single particle with zero spin okay already এটা আমি উপরে ডিসকশন করছনি সো কেতে দুইটা বহির এঠে মু এডিট করিকি পেস্ট করিছি ওকে সো কেতেটা জিনিস যদি পুଣି ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ସଜେଇକି ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ସୋ ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି କୁପର ପେୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମର ଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି କରୁଛି ଆଉ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଯାହାକୁ କି ଆମେ डिस्कसन कला बोसन भाया से बिहेव करुच्ची आ बोसन जेहेतु पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को माने नहीं तेणु एनी नंबर ऑफ कूपर पेयर्स माने एनी नंबर ऑफ बोसन्स मे बी एक्वायर्ड इन द सेम क्वांटम स्टेट हैविंग सेम एनर्जी अच्छा सपोज आमे जीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कथा आसीबा एट t equal to 0 कौन हम all the electrons in the superconducting state are in Cooper pairs मन रख superconducting state माने low temperature सब बड़े okay so all the electrons are in Cooper pairs and all will be in the ground state so that they can absorb or emit energy when the binding of the Cooper pair is broken okay Cooper pair जेतेबेले भांगी जीवो से माने जो से एनर्जी टा बाहरला ताको एब्जॉर्ब बा एमिट करि परिबे and this is similar case of your molecule okay because आमे जानिछु गोटे मॉलिक्यूल दरकार करे जो एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक अप इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स सेटा तमर ए कूपर पेयर पई भी समान ही अछि तेणु सिमिलरली द एनर्जी which is required to break up a Cooper pair is called superconducting energy gap या को हमें रिप्रेजेंट कला Eg okay so the energy at absolute zero माने t equal to 0 या को हमें लिखि परिबा E0 value equal to 2 delta which is the energy gap और delta एठी हे गला energy gap parameter then as per BCS theory ए E0 value mathematically हबो 2 into 1.4 kb Tc kb हे गला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Tc हे गला critical temperature so एठी Eg by kb Tc यार value आसिला 2.8 okay so the existence of this energy gap in the levels has been confirmed by various number of experiments so experimentally a energy gap ro existence को confirm करा सारी जाइछि okay so it has been observed that this energy gap decreases from the value of 3.5 kBT C at 0 Kelvin माने absolute 0 at the transition temperature Tc okay so एठी टेबल रे देखि पड़थबो value of the energy gaps of several superconductors are given in this tabular form देखो aluminum vanadium zinc then gallium ए बढिया गुडाए then niobium tin mercury lead so एठी देखो energy gap रहुची in 10 to the power minus 4 electron volt पाखापाखि रहुची आ एटा तमरो energy gap टा kBTC এই হিসাବରେ ରହୁଛି এই ଅନୁପାତରେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା now let us study the variation with temperature so ଦେଖ high temperature ରେ କ'ଣ ହେଉଛି due to the possibility of thermal excitation because ଯେତେ ଆମେ temperature ବଢ଼େଇବା thermally excited ହେବେ particles ଗୁଡ଼ା
So some of the states will not be available for pair formation. Therefore, the number of possible pairing will be obviously reduced. Okay, because ଆଉ ସେଇଭଳିଆ state ଆମେ ପାଇପାରିବାନି ଯେତେବେଳେ temperature ବଢ଼େଇ ଦଉଛୁ. So ଏଠି possibility ଯେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି, so thereby it is reducing the energy gap parameter. Okay, so ଏଇ energy gap parameter କୁ ଇଏ କମେଇ ଦେଲା. ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ temperature କୁ increase କରୁଛୁ T equal to 0 Kelvin ରୁ, ତାହେଲେ again energy gap reduce କରୁଛି. ଆଉ at critical temperature କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ energy gap ଟା reduce କରିକି ପୁରା 0 ହେଇଯାଉଛି. ଓକେ, ସୋ ଏଇ ହିସାବରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଭେରିଏସନକୁ ଆମେ ଫିଗରରେ ଏଠି देखु अलरेडी ये फिगर आम सुपर कंडक्टिविटी पढ़ला बेले भी देखीचु. ये देख तीन टा एलिमेंट रि एग्जांपल टीन इंडियम एंड टांटालम. ओके, सो ये हिसाब से देख वन रो एठी वन तले भी एठी वन ही अच्छी. ओके, सो एठी एक्स एक्सिस रे टी बाय टी सी को नहींचु आ वाई एक्सिस रे आमे जो एनर्जी गैप पैरामीटर को नहींचु तार रेशियो एट टेम्परेचर टी एंड एट temperature 0. Okay, so this is the temperature dependence of superconducting energy gap. Okay, acha, now finally let us see the BCS ground state. Okay, so देखो BCS ground state कहले कौन बुझीबा, generally normal जो ground state अच्छी ताठू ए BCS ground state टा टिके differ करे. केमती? Because of the non interacting Fermi gas as shown in figure. So देखो एठी फिगर रे आमे एटा होची नॉर्मल ग्राउंड स्टेट ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस आ एठी राइट साइड रे एटा होची बीसीएस ग्राउंड स्टेट 3 डायमेंशन रे. सो देखो ए जो पार्टीशन बा बाउंड्री एटा होची तमरा फर्मी सरफेस ऑफ एनर्जी सपोज ईएफ हे गला. सेही सरफेस टा देखो एठी राइट साइड फिगर रे ए लाइन टा. ओके, किंतु देखो एठी डॉटेड लाइन गोटे बाहर को अच्छी. सिमिलरली डॉटेड लाइन गोटे थी यार भीतर को भी अच्छी. ओके, सो ए फिगर जहाँ जना पड़ुची जे गोटे नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस रे ऑल द स्टेट्स बिलो द फर्मी सरफेस आर ऑक्युपाइड. ओके, फर्मी सरफेस रु तले जेते भी स्टेट थाउ से सबु किछि ऑक्युपाइड आउ तार ऊपर जेते सबु स्टेट अछि दे आर वैकेंट. ओके, अच्छा, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट यदि आमे देखिबा दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट बाय an arbitrary low excitation energy. That is, one can form an excited state by taking an electron from the Fermi surface and raising it just above this surface. Okay, so it already described kora saiji. यार actually जो phenomenon होची, it is the phonon assisted attractive interaction between the electrons which is actually responsible for the BCS ground state. Okay, BCS ground state माने होची एटा होची super conducting state. Okay, so figure रे हमें जेमती देखिला actually this BCS ground state is separated from the lowest excited state by a finite energy gap रोची. Okay, EG, and the formation of the BCS ground state can be understood from the figure जोटा हमें ऊपर देखिला. So a BCS ground state actually it appears to have a higher kinetic energy than the Fermi state, but एठी जो attractive potential energy टा रहउची एटा ऑलरेडी देखा हेनी जदियो फिगर रे, इट इज नॉट शोन इन फिगर, किंतु एठी जो पोटेंशियल एनर्जी टा रहउची बीसीएस ग्राउंड स्टेट रो एटा कोन करूची डिक्रीज कर दउची टोटल एनर्जी को. सो जदियो काइनेटिक एनर्जी टा हाई रहउची किंतु पोटेंशियल एनर्जी पुनी कमे दउची. सो total energy BCS state ro कमी गला as compared to the Fermi state. Thus we can say the BCS state is more stable than the Fermi state and the superconductivity will be persisting. Okay, so the occupancy of one particle orbitals near the Fermi energy EF in the BCS state resembles somewhat like the obtained which is from the Fermi-Dirac distribution at a finite temperature. But however in BCS state कौन होची गोटे पार्टिकल जोटा ऑर्बिटल रे ऑक्युपाई करिकी अछि से माने एक्चुअली गोटे जो पेयर प्रोडक्शन करछंती कूपर पेयर हमें देखुतिला. सो गोटे ऑर्बिटल रे
सपोज गोटे वेव वेक्टर आम देखला आ तार स्पिन को कहबा सपोज स्पिन अप ओके एटा ऑक्युपाई हेकी अछि देन आ गोटे पार्टिकल जार कि वेव वेक्टर माइनस के हितबो आ स्पिन डाउन हितबो सेटा गोटे भी ऑक्युपाई हे परिबो सिमिलरली जदि आमर आ गोटे एमती पार्टिकल अछि जोटा कि वैकेंट अछि ओके प्लस के स्पिन अप एटा वैकेंट अछि ताहले आ गोटे पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल माइनस के स्पिन डाउन एटा भी वैकेंट ही रहिबो सो देखो एटी एटा होची गोटे वेरी इंटरेस्टिंग फिगर एटा होची प्रोबेबिलिटी ऑक्युपेंसी ओके एटी हमें y एक्सिस रे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी को नहींचु गोटे ऑर्बिटल रो नेट काइनेटिक एनर्जी E या को x एक्सिस रे नहींचु सो एटा EF हे गला फर्मी एनर्जी ओके 100% को हमें 1 नहींचु ओके सो एटी लेफ्ट साइड देखौची एक्चुअली तुमरो नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस रो प्रोबेबिलिटी को आउ राइट साइड देखौची BCS ग्राउंड स्टेट को सो देखो नियर अबाउट दिस फर्मी एनर्जी EF एठी जो ए डॉटेड लाइन दुईटा मझी रे हमरो एनर्जी गैपटा आछी EG okay so this BCS ground state is differing from the Fermi state in a region of width EG okay ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ कर्व actually they are very much similar जोटा कि 0 केल्विन रे ओके 0 केल्विन रे ए दुईटा जाक कर्व सिमिलर रहउची किंतु नियर अबाउट द फर्मी एनर्जी एठी BCS ग्राउंड स्टेट रे गोटे एनर्जी गैप देखउची ओके थैंक यू